हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 9 सेक्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट यूनिट 1। हाउ डिड पीपल रीच द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग? The people were excited to go to the spring fair. People were moving to on foot, on horse, bullock carts, etc. to the fair. Done? Okay. Next. Why did the little boy lag behind? The little boy lay behind because he was getting attracted toward the things kept in the fair. राइट मतलब जितनी भी फेयर में चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। करेक्ट, उसमें सेकंड पार्ट है, वाई डिड द बॉय नॉट ओपनली आस्क फॉर बर्फी? क्यों नहीं बोल पाया था? द चाइल्ड वॉन्टेड टू बर्फी, हिज फेवरेट स्वीट, बट ही डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स बिकॉज ही न्यू दैट वुड कॉल हिम ग्रीडी। ओके, चलो सेकंड उसमें ही बात करेंगे आगे। बिकॉज देयर वेयर अदर थिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट रीजन वुड हिज पेरेंट्स गिव फॉर डिनाइंग हिम द लिटल ट्रीट? तो इसमें भी शायद सही आंसर आप लिखो फर्स्ट वाला, बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी, तभी भी राइट होगा। बिकॉज देयर वेयर अदर थिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट ही विश फॉर, मतलब उसको जो चाहिए थी उससे बाकी की चीज़ें बता रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उनको ये भी लग रहा था पेरेंट्स को कि बहुत ज़्यादा लाल ग्रीडी है, जिसकी वजह से उसको डिनाई कर रहे थे ले मतलब देने के लिए। राइट, ओके। नेक्स्ट यूनिट 3। हु वॉज द महेंद्र? तो महेंद्र वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर वर्किंग फॉर firm that provided supervisor at the various construction site. Next, what were the Mahendra duties? The Mahendra duties were typically involved. He was the junior supervisor and the various types of the construction like factories, bridges, dams, etc. Right? उसमें सेकंड है, स्टेट द ईश्वरन डेली रूटीन्स। तो ईश्वरन डेली रूटीन इन्वॉल्व द टाइडिंग द शेड, वेट्स द क्लोथ, वॉश द क्लोथिस, वॉश आता है टी लिख दिया मैंने गलती से, वॉश द क्लोथिस, हैव द लेजियरली बाथ, पोरिंग सर्वल बकेट्स ऑफ वाटर एक्सेट्रा, जो उसके डेली रूटीन वाले वर्क थे। इसके अलावा व्हाट डिड ईश्वरन रीड वाई? तो ईश्वरन वॉज रीडिंग अ सस्पेंस एंड सरप्राइज जो थ्रिलिंग बुक थी वो रीड कर रहा था फॉर द पॉपुलर तमिल थ्रिलर बुक्स। वाई? तो बिकॉज इट इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिस वॉज होल्ड ईश्वरन थ्रोल, उसको इस मतलब थ्रिलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो उस टाइप की बुकें रीड करता था। ओके राइट, आगे बात करेंगे यूनिट 5 की। डिस्क्राइब द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। The happy prince was the gilded all over with leaves of fine gold for eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. Right? Chalo, second questions. Why did the swallow reach the city one night? The swallow stopped in the city to rest during the one night. Why? Because that are the long journey to the Europe, Egypt. So that's why, as his friend has already go, six friends are all six already go there, and after the 6 week, then also that are the atmosphere are the change. So that's why go arrive into the this side, but that nights is the very long night. So that's why that are the rich in the city. Next questions. I have a golden bedroom. Who is I? The swallow is the speaker. I कौन के लिए इसका स्पीकर के लिए यूज किया गया? How can I has a golden bedroom? When the bird sat in between the feet of the happy prince,
So it was surrounded with the gold. So that's why he told कि भाई मैं एक golden bedroom में सोई हूँ, right? Next. Was it raining? No, it was not a raining. So what were the drops that fell on the bird? तो ड्रॉप कहाँ से गिरा था कि हैप्पी प्रिंस जो रो रहा था, एक्चुअली में हैप्पी प्रिंस जो रो रहा था उसका जो ड्रॉप था वो उसके ऊपर आके गिरा था, इसलिए उसको लगा शायद से रेनिंग स्टार्ट हो गई होगी. नेक्स्ट. Why was the speaker known as the happy prince when he was alive? When alive, the speaker was known as the happy prince because he lived in the palace where sorrow was not allowed and his courtiers called him happy prince. आगे बात करेंगे. What makes even the prince leaden heart weep? In the happy prince, even the leaden heart of the statue representing the prince weeps because from his elevated position he can see the suffering and misery of the city which he couldn't see during his लाइफ टाइम. मतलब उसने पूरे लाइफ टाइम में कभी ऐसा नहीं देखा था, जब से वो स्टेच्यू बन चुका है तब से चार चीज़ें वो देख रहा है, राइट. नेक्स्ट, यूनिट 8 की बात करेंगे. उसके भी जस्ट 1 मिनट. ओके डन, सारे आंसर डन हो चुके. लास्ट जस्ट ओके 5 के 3 पार्ट थे, तीनों तीन कंप्लीट हो चुके हैं. 8 का फर्स्ट पार्ट है. whom did the Sergei hire to help him when he moved into another house? तो Sergei hired Lushkoff when he moved into the another house. He hired him to help packing and holding the furniture, hauling of the furnitures. How did the hired man work for Sergei? So Sergei initially gave the Lushkoff the task of chopping wood, various manual labors. He also performed other tasks such as the shoveling snow, tidying the wood shed, and the cleaning. He was also asked to beat the dust out of the mattresses and rugs. Done? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसके अंदर. सेकंड नंबर, हु गेव द लेटर टू whom, what for? तो Sergei gave a letter to Lushkoff. Why? Because Lushkoff having put a man on the right path. Next questions. Why was Sergei feeling pleased? तो Sergei felt pleased because he believed his words had a positive impact on the Lushkoff, the beggar, and who had the seemingly reformed his life and was now living a decent life. क्लियर? सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.